Article 36. Article 36 क्या कहता है स्टूडेंट? The state has the same meaning as in part third. State का वही meaning है जो कि part third में था, जो हमने पढ़ा था कि state क्या है. It is a group of people which are having the same individual identified goal for the betterment of the nation. Then Article 37 कहता है application of the principle contained in this part. The provision contained in this part shall not be enforced by any law, by any court, by the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governments of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making law. तो स्टूडेंट आर्टिकल 37 ये कहता है कि जो भी कुछ स्टेट के बारे में लिखा हुआ है या जो भी प्रोविजंस दिए हुए हैं एक बेहतर स्टेट को क्रिएट करने के, कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑलरेडी प्रिंसिपल्स दिया हुआ है, हमारे जो भी फंडामेंटल अधिकार मौजूद हैं, गवर्नमेंट अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग उसको चेंज नहीं कर सकती. गवर्नमेंट को उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा और स्टेट को वैसे ही आदेश देने पड़ेंगे ताकि वो उसी हिसाब से जो भी प्रिंसिपल बना रही है अपने स्टेट के वो उसके अकॉर्डिंग ही बनाए. से फॉर द एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए एक स्टेट है उसमें परसेंटेज ऑफ हिंदूज ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू द मुस्लिम, या ये कह सकते हैं कि एक स्टेट है उसमें एक पर्टिकुलर कैटेगरी के जो पीपल हैं वो ज़्यादा हैं अपार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट कैटेगरी, then the state cannot pass this rule that because this particular category has the maximum number of people, so only this religion will be preached. They cannot say this because under the fundamental rights we all are having this right to preach our own religion. So in this article 37 it is said that स्टेट को वही प्रिंसिपल अप्लाई करने हैं, वैसे ही लॉ बनाने हैं जो कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हों अकॉर्डिंग टू आवर फंडामेंटल राइट. Article 38. State to secure a social order for the promotion of welfare of the people. The state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economical, and political shall inform all the institution of the national life. आर्टिकल 33 क्या कहता है कि अगर उसने कोई भी ऑर्डर दिया है लोगों की भलाई के लिए तो उसको वहाँ पे लोगों को बताना पड़ेगा, एक सोशल ऑर्डर पास करना पड़ेगा इस तरह से ताकि उनको जस्टिस मिल सके, उनकी जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ है उसको फ़ायदा मिले, और जितने भी नेशन वाइड यानी कि पूरे कंट्री में जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसको उसी हिसाब से आगे प्रीच करें. से फॉर दी एग्जांपल जैसे रिजर्वेशन है फॉर दी एससीज, एसटीज, ओबीसीज, तो अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है कि इन कास्ट को अपलिफ्ट करने के लिए हम एक स्पेशल रिजर्वेशन देंगे गवर्नमेंटल जॉब्स में, तो ये पॉलिसी हर एक बंदे तक, अब ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पूरी तरह से भली भांति वहाँ तक पहुँचाए सो दैट एवरी वन शुड बी अवेयर कि उनको क्या अधिकार मिले हैं, क्या पॉलिसी बनाई है सरकार ने उनके बेटर काम की. ऐसी एक एग्जाम्पल इफ वी टेक मनरेगा, मनरेगा स्कीम वी हैव, अगर गवर्नमेंट ने दिहाड़ी मजदूरों के लिए एक मनरेगा स्कीम निकाली है जिसमें उन्होंने बोला है कि कोई भी दिहाड़ी मजदूर की जो वेजेस है, तनख्वाह है, वो पर डे 350 रुपये से कम ना हो, तो सरकार ने तो ये पॉलिसी बना दी. अब स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो अपने स्टेट के हर एक सिटीजन को इस चीज़ को अवेयर कराए अच्छे से, सो दैट जितने भी दिहाड़ी मजदूर है उनके स्टेट में उनको इस स्कीम का फ़ायदा मिल सके. The state shall in particular strive to minimize the inequalities in income and endeavor to eliminate inequalities in status, facilities, and opportunities, not only amongst individuals but also amongst group of people residing in different areas or engaged in different vocations.
اسٹیٹ کی یہ بھی ذمہ داری ہے، اگر مان لیجیے ان کے یہاں پہ انیکوالٹیز ہو رہی ہیں، یعنی کہ ایک ورگ ہے جو بہت زیادہ پھل پھول رہا ہے، بہت امیر ہے، اور ایک ورگ ہے جو بالکل ہی غریبی کی ریکھا میں، ان کو کھانے کے بھی لالے ہیں، تو اسٹیٹ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے بیچ کا جو انیکوالٹیز ہے اس کو ہٹائے، یعنی کہ جو غریب ہیں ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کرے، بیسک جو نیڈ ہوتی ہے فوڈ شیلٹر کلودنگ کی وہ پرووائڈ کرائے. سے فار دی ایگزامپل جیسے گورنمنٹ نے اسکیم نکال رکھی ہے سرکاری راشن کی دکانیں، تاکہ وہ بھوکے نہ مریں، غریبی اور آگے نہ پھیلے، ان کو پراپر کام ان کو ملے، ان کو ورک اپارچونیٹیز ملیں، سو دیٹ کہ وہ ان کے برابر آ سکیں. اور جو ان کے اسٹیٹ میں بہت زیادہ انیکوالٹیز ہیں ریلیٹیڈ ٹو دی اسٹیٹس آف لیونگ، وہ کم ہو سکے، کرٹیل ہو سکے. یا پھر اگر دیکھا جائے تو ایک اسٹیٹس ہے وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے، دوسرا اسٹیٹس غریب ہے، کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں پرائیویٹ اسکول کی فیس بھرنے کے لیے. تو اس کے لیے گورنمنٹ نے کیا آرگنائز کیا ہوا ہے، گورنمنٹ اسکولس پاٹھ شالہ بنائے ہوئے ہیں. تو اسٹیٹ کا جو بھی میئر ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ریپرزینٹیٹیو ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ وہ وہاں پہ سرکار کے دوارا دی گئی اسکیم، سرکاری اسکول پاٹھ شالہ وہ بنوائے، تاکہ وہاں کے گاؤں کے بچے زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں اور آگے بڑھ سکیں.